हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाउड विद पीके। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, जिससे आपको पता तो लग ही गया होगा कि लिनक्स क्या है। जो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं और नए हैं वो हमारे चैनल पे जाके लास्ट वाला हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। आज हम लिनक्स के रोड मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक लिनक्स रोड मैप है। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है, वेयर दिस लिनक्स इज यूज्ड, लिनक्स का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, व्हाई वी शुड लर्न लिनक्स, हमें लिनक्स क्यों सीखना चाहिए, क्या ये मैंडेटरी है सीखना, फीचर्स ऑफ लिनक्स, फीचर्स और एडवांटेज ऑफ लिनक्स, if we are using the Linux, what are the features or advantage we will get rather than using other OS, distribution of Linux, its mean flavor of Linux, like do we have any kind of flavors available in Linux or not, and what are the popular ones, and what are the career opportunities we will get if we will learn the Linux. जो भाई नए फ्रेशर्स हैं और आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए तो लिनक्स मैंडेटरी स्किल है, बिकॉज लिनक्स का यूज वाइडली मोस्टली हर तरह के हार्डवेयर में किया जाता है, चाहे वो सर्वर्स हो, फोन का ओएस भी लिनक्स के एंड्रॉइड बेस है, क्लाउड लाइक पॉपुलर क्लाउड AWS, एजूर एंड GCP, सुपर कंप्यूटर्स पे भी लिनक्स का यूज किया जाता है। IoT एम्बेडेड इन डिवाइसेज, ऑटोमेटिव सिस्टम्स, सब जगह मोस्टली लिनक्स का यूज किया जाता है। जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, नेट बैंकिंग का टास्क कर रहे हैं, या हमें कहीं पे शॉपिंग करनी है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, या हमें कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करनी है और हमें किसी भी साइट को विजिट करना है, वो सारे एप्लीकेशंस मोस्टली लिनक्स सर्वर्स पे ही रन होते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं लिनक्स क्या है। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम created by Linus Torvalds in 1991. It is the core that manages hardware and software resources and allows applications to run smoothly. Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज का यूज लैपटॉप को रन करने के लिए किया जाता है, और इवन हम लैपटॉप को रन करने के लिए लिनक्स का भी यूज कर सकते हैं और किया भी जाता है। बहुत से लैपटॉप ऐसे हैं, और इवन हम भी अपने लैपटॉप पे विंडोज का और हम भी अपने लैपटॉप पे लिनक्स का ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो सपोज कोई भी हार्डवेयर है, या हमारा लैपटॉप है, या कोई भी हार्डवेयर सर्वर है, या लाइक ऑटोमेटिव और लाइक ऑटोमोबाइल डिवाइसेस, जो भी एप्लीकेशंस और जो भी फंक्शंस डैशबोर्ड वगैरह पे ऑटोमेशन काइंड ऑफ टूल्स जो कार्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, उन सब पे मोस्टली लिनक्स ओएस का यूज किया जाता है। तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो दिस इज अ मैप एक्चुअली। फर्स्ट वी हैव द हार्डवेयर। जैसे ही हमारे पास हार्डवेयर है, तो हम जैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन या कोई टूल इंस्टॉल और यूज करने का ट्राई करते हैं, तो लिनक्स का जो कर्नल है वो ब्रिज का काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और हम कह सकते हैं एप्लीकेशन को चलाने के लिए, एप्लीकेशन की कमांड को लिनक्स के कर्नल तक पहुंचाने के लिए ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। सपोज हमें कोई डेटा स्टोर करना है सर्वर पे, एप्लीकेशन के थ्रू वी हैव टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, सो वेयर दिस इज बीइंग स्टोर्ड, ऑब्वियसली दिस इज बीइंग स्टोर्ड ऑन द हार्डवेयर और हार्ड डिवाइस, बट this is being done through the operating system, और लिनक्स कर्नल का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जो कि जो कि हार्डवेयर को कमांड देता है और उसे टास्क और प्रोसेसेस रन करवाता है। वेयर लिनक्स इज यूज्ड, लिनक्स का यूज कहां कहां किया जाता है। As I said, Linux mostly सर्वर पे यूज किया जाता है, बिकॉज दिस इज हाई सिक्योर्ड, स्केलेबल, मल्टी यूजर एंड लाइट वेट एज वेल। जब हम लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो हमें मिनिमम हार्डवेयर की जरूरत होती है, लाइक
suppose like when we are installing the Windows, we need a 30 or 40 GB space. But in case of Linux, actually, when we are installing this, we need very limited hardware. तो मोस्टली इसका यूज सर्वर्स और डेटा सेंटर में किया जाता है. Runs most of the web servers, database and supercomputers. When we are browsing anything or when we are adding anything on browsing or adding anything on online shopping, when we are adding any kind of equipment, like when we are shopping for the garments, we are adding those in our cart. All these equipments or all these items being stored in the database actually, but through the application. So the data is being stored on the hard drive through the Linux operating system, and we are using applications or databases to store the data. Android OS, जो भी हम मोबाइल का यूज करते हैं, जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, एक दो ब्रांड को छोड़ के लाइव मोबाइल रन करने के लिए, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स रन्स ऑन एंड्रॉइड ओनली. तो ये एंड्रॉइड जो बना है वो लिनक्स के कर्नल पर ही बना है. दे टुक द प्योर लिनक्स, दे मॉडिफाइड इट एंड दे मेड द एंड्रॉइड ओएस टू रन, विच इज वाइड यूज इन एवरी ब्रांड मोबाइल फोन मोस्टली. चाहे आप वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, Xiaomi ले लो, one like very rare brands are there which are not using Android, but like OnePlus ले लो, that is also Android based. Realme, all of the brand actually using Android OS only, and this is based on kernel. This is based on Linux kernel. Cloud computing and DevOps. This is used in AWS, Google Cloud, Azure, and DevOps tool. As I said, if you want to make your career in IT, so Linux is not optional skills. This is mandatory, because if you are trying to learn AWS, Google Cloud, Azure Cloud, even you want to make your career in DevOps, तो DevOps में जितने भी tools यूज होते हैं, mostly those all are running or prefer to run on Linux operating system only. Supercomputers, Linux operating system, even though supercomputers पे भी run होता है. IoT embedded in devices like smart TV, routers, cameras, wireless, and many more. Automotive systems used in modern cars, self-driving technology. Linux versus Windows. Let's check the difference between Linux and Windows feature wise. Cost. Linux ओपन सोर्स है, तो इसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, जबकि विंडोज पेड है. अगर आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपको ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन लगता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जबकि लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए यू डू नॉट नीड टू पे एनीवेयर एनीथिंग. सोर्स, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स और विंडोज इज क्लोज सोर्स और पेड वर्जन. सिक्योरिटी वाइज लिनक्स इज हैविंग हाई सिक्योरिटी rather than Windows is having moderate security, because you mostly hear, like when we have installed the Windows on our laptop or we want high security, definitely we have to take third party subscription to make secure our laptop more. But in case of Linux, we do not need to take any kind of subscription. This is already high secure. We have to make the services enable whatever available and the Linux OS, like we have to make the firewall enable, like multiple services or multiple packages are available in the Linux operating system, which we can install, on which we can make the services active to make our Linux operating system highly secure. Customization. As I said, Linux is open source, so obviously anybody can read or modify the kernel. They can modify according to their requirement. They can add many other features, many other tools as per their requirement. This is free of course. Even you are allowed to make any kind of modification. But in case of Windows, limited. Like some services is still there,
which you cannot modify or edit, make any changes. Those are being managed by the Windows only. System by Linux is having command line interface and graphical interface as well. Windows, when we are using Windows, mostly if we are doing our daily tasks, daily kind of activities, like we are browsing anything, we are doing any kind of internet banking kind of thing, even we are watching anything on the Windows, obviously we are going through the GUI mode only. Linux is best for servers, DevOps, developers. Developers loved a lot this Linux. Windows personal use, gaming and office, लैपटॉप और डेस्कटॉप में ऑब्वियसली विंडोज यूज किया जाता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड. Why we should learn Linux? As I told, like this is open source, free and customizable है, high demand in IT jobs. Like if you want to make career in DevOps, cloud, cybersecurity, obviously you need to learn the Linux on primary basis. Linux is having high performance and stability, more secure है, industry standard. This is very fit for industrial standard. The reason this is being used in servers mostly. Features of Linux. Linux is multi-user, like multiple users simultaneously can easily work on the Linux or access the Linux. Multitasking है, multiple tasks can be done at the same time by the multiple users. Open source and free है. This is also one feature, right? This is open source and free, highly secure है. Permission system, highly secure है. This is having high security features available. Portable है. Easily you can install this on any kind of hardware. There is no dependency for hardware when you are installing the Linux operating system. Easily you can install any kind of hardware. Mostly, like very rare cases you will find hardware is not supporting the Linux operating system. Otherwise you can install it any kind of hardware. As I already told you about so many hardware or like so many equipments where we are using Linux operating system. A stable server runs for years without restart. This is very stable. When you are running your server on Linux, this is highly stable. You can run your server for many days or many years even without rebooting it. What are Linux distribution? When we talk about the Linux distribution, Linux is having many distributions available. Linux kernel. So what some companies did actually, they took the Linux kernel and they added some tools and software and they made their name distribution. Here are some popular ones. Ubuntu. This is world's third large used operating system and this is very user friendly. Linux Mint. Linux Mint is same as we are using Windows OS actually. This is having very good graphic interface. Debian Linux is stable, reliable and great for servers. Red Hat, this is being used on enterprise level. Mostly enterprises के लिए Red Hat को ज़्यादा यूज किया जाता है और Red Hat बहुत ही माइनर सब्सक्रिप्शन फीस लेता है इसे मैनेज करने के लिए. But this is also one kind of free distribution of Linux. CentOS and Rocky Linux. एंटरप्राइज लेवल सर्वर्स पे इसका यूज किया जाता है और ये भी फ्री और स्टेबल है. काली लिनक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग, सिक्योरिटी लिनक्स इज वेरी पॉपुलर वन. फेडोरा, लेटेस्ट फीचर्स एंड इनोवेशन. फेडोरा इज known for its latest features
Arch Linux, advanced users, lightweight and fast. This is career. चलो अभी career opportunity देख लेते हैं. Career opportunities with Linux are DevOps engineer. If you want to make a career in IT sector or you want to choose your profile DevOps engineer, then Linux is not the optional skill. This is primary skills for you. If you are willing to make career in cloud engineering, multiple cloud, whether you want to learn AWS, Azure or Google Cloud, even on-premises cloud, which we say like VMware or VMware or vSphere product, there also Linux is being used mostly. If you want to support or want to make career as user administrator, then Linux is popular one, and you have to learn this on primary basis. Cybersecurity analyst, if you want to make career in cybersecurity profile as well, then Linux is obviously should be your primary choice. SRE, site reliability engineer. If you want to make career in the profile of site reliability engineer, obviously Linux is still priority only. That's all for the today session, guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.